Good evening, guys. Audio video clear अच्छे? Audio video very good evening. Oh, तापस बाबू आपण आज क्लास रे अछंती. Okay, चलो start करिबा आज क्लास. So hello everyone. I'm देह टिके डाउन अछि त हम टिके वॉइस कम रे पढेबी. Okay, जणा नै कोन हेची सडन डिनर कला परे गोटे थ्रोट पेन आसी. Okay. So hello everyone, I am Sudipta Simran Ponda welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. जोथिरे आपनकर डिप्लोमा बीटेक ता सहित एमटेक ता सहित एमबीए एंड एमएससी भी अवेलेबल अछि. जो स्टूडेंट माने इंटरेस्टेड अछंती एमटेक हैला एमएससी पई या फिर आपनकर एमबीए पई ताहाले आपन माने मते कांटेक्ट करि परिबे. मु आपन मानकु गाइड कर देबी केमती कोन आपन मानकर कोर्स फीस रहइबो आपन माने केमती जॉइन करबे. Apart from all guys, audio video सब clear अच्छी and tell me how are you everyone? केमिति सब अच्छी? Quick. केमिति अच्छा सब preparation वगैरह? Cold drink मु आज गोटे ही पीची that too 12 o'clock रे पी थी. Okay, तो all clear था? जीवा first question को. First of all देखि दियंतु 1599 आपनकर SPC 10 कोड जदि आपण माने यूज करूछंती ताहाले पाई जाउछंती गोटे 10% रो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कहा ऊपर ना सीजीएल मेंस पई जो स्टूडेंट माने प्रिपरेशन करूछंती. ऑलरेडी क्लास आपनकर मेंस रो ओवर ऑफ हे गलानी मोर सीजीएल बैच क्लास ओवर हे सरलानी बट एबे आपनकर मॉक टेस्ट चाली छि एंड तार लाइव डिस्कशन भी आपनको प्रोवाइड करा जाउछि जो माने एनरोल करिसंती से माने निहाती जानि थिबे. ओके श्रद्धा वेरी गुड इवनिंग. मोर गोटे सांग अछि स्कूल फ्रेंड ता ना भी श्रद्धा. आसो देखो सहकारी बैच गाइस प्योरली फॉर द जूनियर असिस्टेंट एंड 1199 देके आपण माने एनरोल करि परिबे फॉर द जूनियर असिस्टेंट सहकारी बैच एंड आपण माने जदि चाहउचंदी ओपीएससी एएसओ जोडा कि एबेकार हाइलाइट न्यूज रे अछि आपण माने जानि थिबे नोटिफिकेशन रे अछि अपकमिंग आसीबा को जाउछि बट जते आसीबो आपण माने प्रिपरेशन करिवे दैट विल बी द ओस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. जदि चाहउचंदी भाबिचंदी स्ट्रांगली डिसाइडेड अछंदी प्रिपरेशन करिया पई देन एनरोल राइट नाउ एंड एटार ना रहउछि आपनकर अनुशासन बैच 1999 देके आपण माने जॉइन करि परिबे बैच को. आफ्टर दैट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज क्विक. सीजन चेंज सो हेल्थ खराब होबो उते बेले भल लागिबनी बंद कर देबे. श्री कैस लाइक मो बॉयफ्रेंड अभी ए टाइप रो टिके केयर वेयर करि थांता ताहाले ब्रेकअप हे न थांता भाबो. आसो good evening ma'am, hope you are fit and fine as always. Nice. Yes. Asa. Oh. Asa. First question mate ko in the context of the ancient Indian history the term nivi kahichi and kahichi kono na batayana kahichi mentioned in Vedic text primarily referred to what? Jaldi. Answer. लुका बाबू आज क्लास रे अछंती वाह कोन कला तमे. आसो सो राइट आंसर कोन देजो समस्त ऑप्शन बी माने जानिथिलो एटा जानिथिलो सतरे कि एटा तुमको माने पढी दिला एटा मारचो समस्त मिसी की ढाबा मारुचो. तो राइट आंसर आपनकर कोन होची ना वैराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल गारमेंट्स सहित हमें रिलेट करूची. व्हाई बिकॉज आपण माने जानि चंती निपी जोटा को हमर निपी बोली कहया जाए दैट रेफर टू द वैदिक पीरियड रे आपनकर ड्रेसिंग सेंस सेटा को आपनकर बुझाई. जस्ट हैव ए लुक हियर कोन कहिची ना आपनकर जो निवी कहिची मेल माने आपनकर जो गारमेंट्स वेयर करंती तांकर बॉटम वेयर अंग वस्त्र जोटा बॉटम वेयर अछि सेटा को हमर निवी कहया जाए. सेम जदि आपनकर बत्यायना कहया जाए ताहाले आपनकर जते बेले गोटे बहु बेस हेकी गोटे ब्राइडल ग्रूम आपनकर रुहंती तो टोटल सेट को आपनकर कोन कहया जाए ना निवी एंड आपनकर ग्रूम को कहया जाए कोन ना दैट इज द बत्यायना. एति कि जिंस त माने क्लियर गाइस. सुनी ब्रेकअप आपनकर दुख लागिला अरे तमान त चाहूथिलो माने स्टेटमेंट रे खाली कहउछ दुख लागिला मु जानछि तमान को मन भीतर बहुत सारा लड्डू फुटुथुवा. हो आसा next question मते को which statement are correct regarding the subsidiary alliance system introduced by Lord Wellesley. right answer quick. ये कौन कंटेंट स्टाइल चेंज हो जाइछि कंटेंट स्टाइल चेंज जाइछि विवेक तमे बहुत दिन हला क्लास कर नथलो बा सेथि लागि केबेठ हमर पीपीटी स्टाइल चेंज हो गलानी. आसा
को मते कोन कहिछि व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सब्सिडियरी अलायंस कथा कहिछि ता माने आपन को कोन कहिछि आगे स्टेटमेंट पढिबा ना कहिछि रूलर हैव टू डिसॉल्व ओन आर्म्ड फोर्सेस ताहाले आपन माने कुहंतु मते जो रूलर आपन को कहिछि लाइक हमें कहि परिबा द रूलर जो माने थिबे द रूलर ऑफ द अलाइंग स्टेट दे हैड टू डिसॉल्व देयर ओन आर्म्ड फोर्सेस इज दैट ट्रू Is that true? No, because rulers were forced to कोना ना आपनकर डिसबैंड करिया लागि देयर ओरिजिनल इंडिपेंडेंट आपनकर जहां भी स्टैंडिंग आर्मीज रहउचंती से माने ब्रिटिश मानकर कोना फोर्स रे थिले से मानको बाहर करी कि ब्रिटिश माने तांकर फोर्स को इंप्लीमेंट करैथिले तो एठी आपनकर एटा स्टेटमेंट रॉन्ग हे गेला देन कहछि ब्रिटिश रेसिडेंट ओके ब्रिटिश रेसिडेंट स्टेशनड एट कोर्ट तो एटा आपनकर राइट आंसर हबो कि द ब्रिटिश रेसिडेंट वाज स्टेशनड एट द रूलर्स कोर्ट when name देखंतु a permanent british diplomatic official was stationed in the alice court आपनकर जे कोनसी कोर्ट थिला आपण माने मने रखिथिबे सॉरी हां कोर्ट रे आपनकर कोन थिला ना ब्रिटिश माने तांकर निजर आर्मी को अपॉइंट करूथिले एंड जने ब्रिटिशर्स आपनकर सबु राजदरबार आपनकर जने प्रेजेंट थांती आफ्टर दैट द Hyderabad was first state to accept Hyderabad first आपनकर एटा को एक्सेप्ट करिथिला कि yes the Nizam of Hyderabad officially एटा को एक्सेप्ट करिथिले and became the first Indian ruler to formally sign the subsidiary alliance केबे हेतिला मते कोंदु 17 केबे हेतिला subsidiary alliance कहले 1798 सो ऑप्शन 3 हैला राइट तो 2 and 3 जोठी ऑप्शन अछि ऑप्शन बी सी ना आपनकर कोन कहूची ना सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कथा कहिची फर्स्ट थिंग आपण माने मन रखंतु ए ब्रिटिश रेसिडेंट वाज स्टेशनड एट द कोर्ट रूल आपनकर होइबो देन हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट दिस अलायंस नेक्स्ट कोन कहिची देखो ना हु ऑर्गेनाइज द रेड सार्ट कोन ना खुदाई खिदमतगर आपनकर की करथिले जल्दी मराठा वार भी हेतिला आज्ञा अलिसा नेक्स्ट क्वेश्चन मते कोंदु कोन कहिची हु ऑर्गेनाइज द रेड सार्ट मूवमेंट आपनकर की ऑर्गेनाइज करिसंती खान वेरी गुड राइट आंसर आपनकर खान अब्दुल जफर खान देखो तो कौन कहिसंती ही फाउंडेड द नॉन वायलेंट खुदाई खिदमतगर दैट मींस द सर्वेंट ऑफ गॉड मूवमेंट्स whose volunteers wear red dyed uniforms रे आपनकर थांती एंड केबे आपनकर हेइथिला मन रखंतु 1929 मसिया रे आपनकर एटा फाउंड हेइथिला एतिकी जिंस आपन माने मन रखिबे काली क्लास रे आपन मानु कहिथि तांकर बेस्ट डायलॉग थिला आई एम ए मुस्लिम ए पर्सन ए लवर ऑफ माय कंट्री एंड ए नॉन वायलेंट मैन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन मते कोंतु द फेमस गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कोन कहिछि द फेमस गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922 दैट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय whom गया सेशन कथा पचारछि कहा सहित हम रिलेट करेबा जल्दी आंसर दियो जेते बेले आपन को गया सेशन कथा कहिछि आमे कहा सहित रिलेट करेबा क्विक गाइस राइट आंसर कोन ऑप्शन वेरी गुड ए हेबे आपनकर चित्तरंजन दास केबे हेतिला 1922 मसिया रे आपनकर गया सेशन हेतिला जोथि आपनकर कोन फॉर्मली स्वराज पार्टी सहित हम रिलेट कर परबा रिजाइन दे देथिले होना नै को मोतीलाल नेहरू कहले आपन माने को फाउंडेड बाय द स्वराज पार्टी आपन माने जानिसंती 1928 ता कथा छाडो दो एबे देखंतु चित्तरंजन दास he presided over the pivotal 1922 Gaya session where his proposal to enter legislative councils was defeated leading him to resign the formal कोन स्वराज पार्टी रो रिजाइन दे देथिले आपनकर के ना चित्तरंजन दास एतिक दिन आपनकर मन रहइबो जनवरी 1923 मसिया रे आपनकर चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू formed the स्वराज पार्टी है ना चलो नेक्स्ट में देखो which Harappan site yielded evidence of unique water harnessing system आसो राइट आंसर कोन हबो जल्दी आंसर दियो मते कुआ अच्छा मते कहला पंजाब केसरी आपनकर को फ्रीडम फाइटर को टाइटल दिया जाई छी पंजाब केसरी जल्दी आंसर दियो मु किछि एक्स्ट्रा आंसर क्वेश्चन पचारू छी गाइस टिके ट्राई कर आंसर देबा पई कोन हबो राइट आंसर धोलावीरा वेरी गुड राइट आंसर आपनकर कोन ना धोलावीरा सहित हमें जिबा दैट वाज प्रेजेंट कोठी आपनकर ना गुजरात रे सिचुएटेड एबेसी एंड दिस साइट ग्लोबली सेलिब्रेटेड फॉर द एडवांस्ड लेवल नो द ट्रिपल फोर्टिफिकेशन सिटी लेआउट रे आपनकर ये चाउची जदि हमें कहि परिबा कोन ना बनावाली हैला काली बैंगन हैला रिलेट करता बनावाली हैला आपनकर कोन ना आपनकर हरियाणा सहित रिलेट करे काकू याकू आपन माने हरियाणा सहित रिलेट करे परिबे हां तो
काली बेंगन कहले आपण माने कोन राजस्थान सहित रिलेट करे परिबे ता सहित जिबे जिबे फेरी देन राखी गड़ी ये कहले आपनकर ये भी आपनकर कोठी राखी गड़ी भी आपनकर हरियाणा रो ता सहित भी रिलेट करे देबे सो राइट आंसर आपनकर धोलावीरा गुजरात रे प्रेजेंट दैट इज द एडवांस ट्रिपल फोर्टिफिकेशन सिटी लेआउट आपनकर एठी अछि देखि दियंतु को टाइप रो सेते बेले जदी आपण माने सिटी देखिबे स्विमिंग पूल रो आरंभ करी एक्सेट्रा आपनकर सब जिंस कोन से माने तयारी करिथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दिलो छुआ ना अरेंज इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जदी क्रोनोलॉजिकली आमे इवेंट गुडा को अरेंज करूछे ताहाले आपण माने कहंतु असेंडिंग ऑर्डर रे सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर रे आपनकर कोटा रहिबो असेंड डिसेंड सॉरी असेंडिंग ऑर्डर रे मते कहंतु फर्स्ट कोन कहिची ना चित्तगोंग आर्मोर रेड देन कहिची सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देन कहिची एग्जीक्यूशन ऑफ द भगत सिंह देन कहिची नेहरू रिपोर्ट सो राइट आंसर आपनकर कोन हिजो मते कहंतु फर्स्ट आपनकर नेहरू रिपोर्ट आसीथिला हो ना नै मते कहंतु सो नेहरू रिपोर्ट आपनकर केबे आसीथिला ना 1928 मते रे तो ऑप्शन ए 4 अछि एठी गोटे तो ए दिटा आपनकर एलिमिनेट हे गला तापर आपनकर कोन चित्तगोंग आर्मर रेड ये आपनकर केबे आसीला 1930 मते रे आपनकर ये आसीला आर्मर रेड ये आपनकर 1930 रे ये आपनकर 1928 रे तो 4 पर 1 ए ऑप्शन टा लागु ठीक देखि दियंतु कोन अछि कोन अछि आपनकर फैंस इंसिडेंट आपनकर नेहरू रिपोर्ट आसीथिला 1928 रे एज आई टोल्ड यू दैट इज राइट देन आपनकर चित्तगोंग आर्म्ड रेड आसीथिला अप्रैल 1930 रे दैट वन ट्रू देन आसीला एग्जीक्यूशन ऑफ द भगत सिंह 1931 रे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 रे लेटर ऑन आगो भगत सिंह को एग्जीक्यूट करा जायतिला आफ्टर दैट आपनकर कोन ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करा गला एतिकी जिंस आपन माने क्लियर डन 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 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मते को अंडर हुज रेन वाज दीवान ई अमीर कोही एस्टैब्लिश्ड दीवान ई अमीर कोही आपनकर कहांक पीरियड रे एस्टैब्लिश गाइस हेची मते किए कहि परिबो क्विकली आंसर दे दियो कोन हबो हां जय नमस्कार तो कोन हेबे ना आपनकर मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हेई पुणी कोन पे ए देला ऑप्शन ए रे आपनकर अलाउद्दीन खिलजी अछंती अलाउद्दीन खिलजी को आपनकर कोथि पय फेमस कहितली मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस आपनकर आनिथिले आउ कहा सहित ना दीवान ई रियासत जदी आपन क्वेश्चन पछला दीवान ई रियासत रो की आपनकर फाउंडर की पछरला ताहाले आपण माने रिलेट करि परबे राइट आंसर आपनकर मोहम्मद बिन तुगलक he created the diwani amir kohi and to extend the cultivation improve करथिले क्रॉप रोटेशन को प्रोवाइड करथिले डायरेक्ट स्टेट लोन्स दैट इज द सोंधर बोली डायरेक्ट स्टेट लोन को कोन को जाउतला सोंधर को जाउतला टू द डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स मानन को लोन प्रोवाइड करथिले माने भापंतु सेते बेले पीरियड रे भी आपनकर लोन प्रोवाइडिंग सिस्टम भी थिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियो व्हिच एक्ट एनैक्टेड ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली को एक्ट आपनकर एनैक्टेड हेतिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली ऊपर क्विक आंसर मते यार के दबो एगोडी चॉकलेट आसो कोन कहिची चार्टर एक्ट 1813 आपनकर कहिची अच्छा चार्टर एक्ट 1813 कहूची माने हम कहा साथ रिलेट करबा मते की कहि परिबो ना ये ब्रोक करथिला ईस्ट इंडिया कंपनीज रो कोन आपनकर इनिशियल इंडियन मोनोपोली बट स्पेसिफिकली जदि हम कहि परिबा कि प्रिजर्व हेतिला इट इज एक्सक्लूसिवली कोठी ना ट्रेड प्रिविलेज सहित दैट मींस आपनकर कोन ना कंपनी रिवोट करथिला चार्टर एक्ट 1833 सहित केतना ऑप्शन बी सहित डी लिखि देलनी कोन सब मुंडा फुंडा माड हो गेलानी कि कोन डी सहित सीधा बोलेलोनी डी आपनकर कोन अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सहित गला एटा आपनकर दिस इज द लैंडमार्क दैट लेजिस्लेशन आपनकर लेजिस्लेशन अबोलिश हेतिला ईस्ट इंडिया कंपनी एंटायरली अबोलिश करथिला द लेजिस्लेशन को दैट वाज दैट ओके जोथरे आपनकर कोन डायरेक्ट गवर्नेंस ऑफ इंडिया ओवर द ब्रिटिश कोन क्राउन पाखु को पड़िथिले पावर सब जेते बेले आपनकर करप्शन बढ़ी गला करप्शन को रोकिया पय ईस्ट इंडिया कंपनी रो सब पावर आपनकर के ने जाइथिले ना ब्रिटिश क्राउन नहीं जाइथिला ए जिंस तो तास से रिलेट करबो ना हां 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 चलो तो राइट आंसर आपन करो चार्टर एक्ट 1833 से रिलेट कर परिबे दैट इज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडियास एडमिनिस्ट्रेशन एंड हम रिलेट कर परिबे दैट एक्ट कंप्लीटली रिवोक्ड द कंपनीज रिमेनिंग कमर्शियल प्रिविलेज विद द चाइना एंड टी कन्वर्टिंग इट ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्लियर नेक्स्ट मते कहि दियो रुपया अच्छा पुणी को रुपया सिल्वर कॉइन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हु जो रुपया आपन को कहूची दैट इज अ सिल्वर कॉइन फर्स्ट टाइम आपन कर किए मैम आज टिके जोक हो ओ परिबा जोक एबे आगर क्लास टिके पढी दियो तापर करिया मझरे मझरे हला आसो मते को रुपया सिल्वर कॉइन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हु कहा द्वारा जल्दी आंसर दियो
ये कौन माधव आसिकी सॉरी एसएसएस कहलेनी एसएसएस किए एसएसएस किए शेरशाह सूरी को रिलेट करो छ अरे बा माने शेरशाह सूरी को तांका वाइफ ही एते प्यार से एसएसएस रखी नथिबे तमे जते कि प्यार से तांको संबोधन करू छ काहे कोठी ना कोठी तांका स्त्री को आत्मा आसिकी तम पाखु को न पहुंची जाओ कि काहे कि मो हस्बैंड का ना एते प्यार से ने लगले बी अवेयर अबाउट दैट आसो सो राइट आंसर आपनकर कोन हेले ना शेरशाह सूरी हेले आपनकर 178 ग्राम रो like 178 ग्राम सॉरी 178 ग्राम रो आपनकर कोन रुपया इंट्रोड्यूस करिथिले ओके देखंतु कोन कहछि ना शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस द स्टैंडर्ड प्योर सिल्वर कॉइन वेटिंग केते ना 178 ग्राम्स रा आपनकर थिला दैट नेम्ड आपनकर रुपया थिला which laid the structural foundation of the modern Indian currency की ओके तो स्ट्रक्चर करथिले आपनकर कोन फर्स्ट टाइम पई शेरशाह सूरी एंड मन रखंतु कोठी आपनकर जन्म ग्रहण ताकर हेतिला ना बिहार थारे ताकर जन्म ग्रहण हेतिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड द फाउंडर्स करेक्टली मैच्ड क्या हुई गबा तम मानकर पुनी क्या हुई गबा पुनी पिंकू बाबू आसिले सी पुनी गोटे एसएसएस लिखलेनी हम एसएसपी लिखु ना आई वुड बी मोर हैप्पी कि त माने जदी एसएसपी लिखुछ एसएसपी लिख सिख एसएसपी लिखिना से इंग्लिश जानी नथिबे किए कहिला सब जानी थिबे जदी जानी भी नथिबे तांका आत्मा तो 2026 के आस परिबो ना ऑब्वियसली सिखि परिबो वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है बोलना मत आसो सो राइट आंसर आपनकर कोन हे गला एठी क्विक कोन हला फर्स्ट कहि जी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड द फाउंडर्स करेक्टली मैच करंतु तो फर्स्ट आपन माने को कोन कहिला ना अनुशीलन आपनकर समिति ताको आपन माने कहा सहित रिलेट करे पाइबे तो ये आपनकर 1 अच्छा पचाची को तीनटा आपनकर करेक्टली मैच अछि ओके दैट अनुशीलन समिति तो पीएन मित्र ही अछंती अभिनव भारत आपनकर 1 2 3 सब तो आपनकर ठीक अछि कोन सब आपनकर ठीक अछि हैला किए रे से मो क्लास रे आसी की केडीएस को सॉरी कुमार दिग्विजय फैन क्लब सर आपण की आपण को ना रे की मु जानि परउनी सॉरी सर आसन तो नेक्स्ट आपनकर कोन कहि छी देखन मैच कर देछि अनुशीलन समिति आपनकर कहा सहित ना प्रमथनाथ मित्रंक सहित अभिनव भारत सोसाइटी आपनकर विनायक दामोदर सावरकर सहित गांधार पार्टी आपनकर लाला हरदयाल सहित नेक्स्ट मते कहंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द right to establish and administer the educational institutions to minorities कौन है राइट आंसर ना ना मु बा मैथ मु माने कोन मु भी जानि परनी आपण कोन गोटे मूल्यवान स्टूडेंट माने एमिति ना रे त माने आसीबो ना कहिबे बे केडिसन को सुनिबो गाली टिके भल लागिबो आसो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन है आपनकर अंडर आर्टिकल केते कहउछ 30 फैंटास्टिक तो अंडर आर्टिकल 28 हमें कोन कहि परिबा ये रेस्ट्रिक्ट करूची एंड रेगुलेट करूची रिलीजियस आपनकर कोन जेति की इंस्ट्रक्शंस अछि और द रिलीजियस ओरशिप आपनकर हैला गोटे स्पेसिफिक स्टेट जदि आपनकर कोन स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैला आपनकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैला सेठी जदि हमें रिलीजियस को देखैबा कि ना ना ओनली हिंदू धर्म रो लोक माने पाठ पढि परिबे पिला माने मुस्लिम माने पढि परिबेनी कि क्रिश्चियन माने पढि परिबेनी ताले एटा आपनकर अंडर आर्टिकल 28 कोन ना बैन करा जाईछि देन आपनकर अंडर आर्टिकल 29 कोन बैन करा जाईछि माने की कहि परिबो दैट वाज प्रोटेक्ट कोन करूची ना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज आपनकर स्क्रिप्ट हैला और कल्चर ऑफ एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग द इंडिया तांकर स्क्रिप्ट हैला तांकर लैंग्वेज हैला एंड तांकर कल्चर हैला तो जहार जो स्क्रिप्ट रहिला लैंग्वेज रहिला कल्चर रहिला सेटा से यूज करि परिबे नोबडी कैन स्टॉप देम तो एटा आपनकर अंडर आर्टिकल केते ना 29 अकॉर्डिंग रहुची तो अंडर आर्टिकल 30 आपनकर कोन कहिला आर्टिकल 30 ग्रांट्स ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज the fundamental right to establish and administer educational institutions of their choices okay next question dekho which of the following writs can be issued by the Supreme Court of High Courts to command a public official or a lower court to perform a mandatory statutory body कौन हमारा right answer पिंकू अरे यार तो मैंने कौन सब करूचो केडीएस सर को नारे आसी जाउ छ पिंकू सर को नारे आसी जाउ छ even I can pronounce your name guys try to understand that they are my teacher also आसो so right answer आपनकर कोन हे गेला obviously मैडम ऑफ सहित केते जण राइट ऑप्शन बी वेरी गुड
आस सो मैंडामस को कौन कहूची मीनिंग वी कमांड दैट मींस मैंडामस माने कौन वी कमांड एंड इट इज इश्यूड टू issued to compel a public official or lower authority to perform their mandatory legal duty. Next mate कहंतु the ideal of welfare state in the Indian constitution is explicitly enshrined in which part? Quick. आस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि आपनकर डीपीएसपी कौन कहिछि डीपीएसपी आपन माने जानिथिबे तो प्रिएम्बल कहला माने आपन माने कहा साथ रिलेट करि परिबे ना एक्ट एज अ इंट्रोडक्टरी आपनकर प्रीफेस बलिया that contain करूछि all the core philosophy the objectives and the basic structure of the constitution जोटा कि आपनकर इंट्रोडक्शन पेज रहउछि that is our preamble जदि कहछि फंडामेंटल राइट्स सेटा आपन माने जानि सन्दी जुडिशियल सिविल लिबर्टीज अंडर आपनकर जाउछि जे कि गारंटी प्रोवाइड करूछि द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एंड प्रोटेक्ट करूछि कोन इंडिविजुअल्स को जेति कि आपनकर स्टेट तीनरी आपनकर अछि से सब को आपनकर डिस्टिंग्विश करूछि तो राइट आंसर आपनकर कोन डीपीएसपी हे गला क्लियर देखो तो राइट आंसर कौन कहिछि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल सोसाइटी सोशियो इकोनॉमिक गाइडलाइंस फॉर ए वेलफेयर स्टेट दैट मींस एलिमिनेट करिवो पॉवर्टी एंड एंश्योर करिवो ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजंस जदि कहबा सिक्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जदि कहछि गारंटी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस जदि कहछि प्रमोट पब्लिक हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन एंड एक्सेट्रा आई हैव मेंशन्ड हियर यू कैन हैव ए लुक आफ्टर द क्लास ending. Next mate कहंतु which constitutional amendment act substituted the words and rebellion for internal disturbance in article 352 कथा कहिछि गाइस क्विकली कहि देला हां सोनल ना बाग हां तांका भीतर की जने थिबे आ की अछ बेहरा बाबू ना पत्ती बाबू आस मते कहंतु कोन हबा राइट आंसर 40 वेरी गुड 44th अमेंडमेंट केते जन सीरियस एस्पिरेंट हमर अछंती जो माने कि एग्जैक्टली क्लास को आसंती आंसर करबा लागि आउ केते जन हमर एस्पिरेंट अछंती खाली गुल्ली गप करिया पे अछंती कोउटु की झियोटे देखि देला नुवा झियोटी की क्लास को पळे आसी केमिति कोन करी कि से मैडम को ग्रुप रे ऐड हे गेला नंबर केमिति कोन की पाई जी खाली एई चिंता रे से माने क्लास को आसुछंती विश्वास करो तो काइंडली मु कहबी सब झियो माने तांगा ना चेंज करी कि पुओ मान का ना रे आसो एबे तुम मान को सबक सिखिबो ए सब एथि पे आसो ना मैडम को क्लास को केते नुआ झियो सब आसुछंती तांका नंबर पाइबो बोली नाही बद्ध स्थल सुधुरीबनी रे तुम माने सुधुरीबनी सतेरे की कथा हो देखो 42 अमेंडमेंट आपनकर कोन कहिछि दैट वाज एनैक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी केबे हेतिला 1976 रे आपन ये एनैक्टेड हेतिला इमरजेंसी दैट वाज एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट कहिथिली काली सेक्युलर कहिथिली काली इंटीग्रिटी काली कहिथिली सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी एटा आपनकर 1976 42nd अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला हमर इमरजेंसी टाइम रे एति जिंसा क्लियर ना ना चीटिंग नुह तमे माने रोटी चीटर बा हां सो 44th अमेंडमेंट ऑलरेडी टोल्ड यू ये आपनकर पचले केबे हेतिला 1978 कथा रिलेट करले 44th अमेंडमेंट कथा कहबो 52 हेले आपनकर केबे 1985 रे आपनकर 1985 रे 52 अमेंडमेंट एक्ट हेतिला अंडर दैट एक्ट आप कहि परिबे दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड द 10th शेड्यूल एंड लीगली आपनकर कोन हेतिला ना पेनलाइज करा जाइथिला लीगली पेनलाइज करा जाइथिला को ना पॉलिटिकल आपनकर डिटेक्शन को आपनकर लीगलाइज करा जाइथिला 86th अमेंडमेंट एक्ट कहले आपनकर ये केबे ना ये आपनकर लेटर ऑन 2002 रे कहिथिली ऑलरेडी आपन मानकू सो देखि जंतु 44th अमेंडमेंट एक्ट 1972 रे सॉरी 78 रे हेता तो सेफगार्ड द डेमोक्रेसी it limited emergency powers by changing internal disturbance to arm the armed rebellion clear next question the concept of judicial review in the Indian constitution is primarily adopted from the constitutional framework of which country jaldi यार आंसर दे दियो जल्दी बेटर कि तमाने चेंज करि दियो जदी चाहू छ गोटे कोन शांति वाला ब्रीथ लेवा लगी क्लास रे तम पछरे केही पडिबेनी समस्त को रिक्वेस्ट करछि सब पुओ माने झियो माने का नारे आसी जा सब झियो माने पुओ माने का नारे आसी जा बैलेंस्ड हे जियो हैला आसो सो मते यार आंसर दियो द कांसेप्ट कोन कहू छ आपन कर ऑब्वियसली कहा था मैं आनी छे कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू कहू छ माने आपन कर ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ठु हमें आछे यूके ठु त केबे आनी बनी हो ना नहीं यूके ठु त केबे आसी बनी काने यूके ठु हमें कोन आनी छे ना द कंट्रीब्यूटेड टू द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने कोन रूल ऑफ लॉ हमें आनी छे यूके ठु जदी आयरलैंड कहू छी आयरलैंड ठु भी हमें किछ आछे ना तो आयरलैंड ठु कोन आछी के मते कहि परिबो आयरलैंड कोन प्रोवाइड करू छी
कौन ना द फाउंडेशनल कंसेप्ट ऑफ द DPSP, the famous directive principle of state policy and the presidential election method. कौन जदि आपण मन आयरलैंड कहिबे दैट इज द फेमस वन कारण हमर बेस्ट पॉलिसी DPSP ता सहित प्रेसिडेंट इलेक्शन आपनकर जो मेथड रे हुए ना तो एई टोटल ता आपनकर कहाटो ना आयरलैंड हमें बोरो करिसे इफ द क्वेश्चन विल आस्क अबाउट द ऑस्ट्रेलिया ता हमें कोन बोरो करिसे ताहाले मन रखंतु कंकरेंट लिस्ट कोन that provided the concept of concurrent list, the freedom of trade and आपनकर joint sitting parliament रे आपनकर कोठु आसीची joint sitting parliament आपनकर ऑस्ट्रेलिया ठु आसीची एतिकी दिन समान रख परिबे concurrent list आसीची and आपनकर freedom of trade आसीची लिखि दोचे तमान को मंडरे कोन रहिबो कि तमान को मंडरे जबे थिबो को झियोटा ना चेंज करके आसीबो आगो नाटा देखि देथाओ कि आसीनी क्लास को आमे जानि देबा कि ना चेंज करके आसी एटा तमान को माइंड चलथिबो जानछि तमान को भलसे मोरी छोटी आसा फ्रीडम ऑफ ट्रेड ओके आ आपनकर कोन कहली कंकरेंट लिस्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड आपनकर जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट हैला ओई गधसान गधिस अरे अरे तुम माने पा कहितला मु खराब लागुची मैम ए वर्ड कहिबेनी ना कि मन तुम माने कथा रे ना कि आसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठो मानजे कोन रे कि भाई साहब तेरी कौन हो गला गलती से मिस्टेक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया पचारी छी जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया आसा थाई प्लाटर खाली से रोही तमे से थाई प्लाटर पछरे पड़ी थाओ आउ किसे नाही खाली थाई प्लाटर इस्तर रियल रोज दो ना खाली इमोजी रे दोचो एस्टैब्लिश बाय द लॉ एंड कौन पचारलो टिके रो पळेला अरे यार कौन जोटे पचारले क्वेश्चन टा गोटे मिनिट रो मैम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गोटे आपनकर लॉ टा जते बेले अमेंड हे जाय थाय लॉ टा आपनकर इंप्लीमेंट हे जाय थाय सेटा आपनकर कोन आफ्टर लॉ हमें कहि परिबा ताको हमें कहि परिबा दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने जते बेले हे जिवो ताको हमें कहबा एस्टैब्लिश जते बेले लागू हे जिवो लॉ टा आपनकर एटा आपनकर बिल टा पास हे जिवो सेटा को हमें लॉ कहि देबा ओटा की एज ए लॉ अप्रूव्ड हे गला जते बेले अंडर प्रोसेस जायछि ताको हमें प्रोसेसिंग कहिबा आ सिंपल एज इट हैला हां जापान में हेतिला एग्जैक्टली जापान को हमें आणछे यस नेक्स्ट मतलब who among the following is the ex officio chairman of the zonal councils सहित जिबा कहा सहित क्विक होम मिनिस्टर पक्का चाचा जी पुनी मारलेनी पिंकू अरे यार पिंकू ना रे आसोनी ना तुम माने आसो सो राइट आंसर आपनकर कोन हे गला ना यूनियन होम मिनिस्टर सी ना द यूनियन होम मिनिस्टर के अछंती चाचा जी ना कि आसो act as the common ex officio chairman of all the 5 statutory zonal councils to maintain the federal coordination clear तो आपनकर फर्स्ट जोनल एक्स ऑफिसर चेयरमैन आपनकर 5 जोनल काउंसिल के निजे आपनकर होम मिनिस्टर अछंती क्लियर कोन कोन जोनल आपनकर काउंसिल अछि गोटे नॉर्दर्न जोनल गोटे सेंट्रल जोनल गोटे ईस्टर्न जोनल गोटे देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपन मन जानि गले आ गोटे आपन मन सेंट्रल लगे देले कोन सरला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ता सहित सेंट्रल आपनकर की आछो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश बिहार एंड झारखंड एते जिंस मन रखनु किंतु नॉर्दर्न जोनल ले आपनकर कोन दिल्ली एनसीआर आपनकर नॉर्दर्न जोनल ले आसुची कैपिटल और माइंड भूलबाल मारिबो नै सेंट्रल सहित नबनी हैला चलो नेक्स्ट मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्य सभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्विक यार आंसर मत ये दबो ताकू कोन देबी देखि भाभी की दे आंसर दियो आको 6टा ना मैम 5टा ना 6टा कोन पई 5टा तो जोनल आ गोटे को जोनल टा कोहा को मिस होचा गोटे आसो सो राइट आंसर मते कोन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डील्स विथ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्य सभा रे कोन केते नंबर 4th वेरी गुड कोन हबो ना 4th शेड्यूल अकॉर्डिंग आपनकर ए जिंसटा हेइ जिवो जदि पछारिबा 3rd शेड्यूल एटा आपनकर कोन करिवो कंटेन करिवो ऑल द ऑफिशियल फॉर्म्स ऑफ द ओथ एंड अफर्मेशन कहले यूनियन मिनिस्टर हेले लेजिस्लेटर्स हेले एंड आपनकर कोन जति कि चीफ जजेस हेले त इमान को नै कि आपनकर 3rd शेड्यूल ले कहबो 4th शेड्यूल कहले आपन रिलेट कर परिबे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ राज्य सभा कहले 4th रे देखि दियंतु द 4th शेड्यूल आपनकर एलोकेशन ऑफ द पार्लियामेंट सीट्स इन द राज्य सभा विषय मेंशन करा दछि केते स्टेट्स आपनकर 229 सीट्स रहउची यूनियन टेरिटोरीज जे आपनकर टोटल 12 सीट्स रहउची तो मन रहिची एटा टोटल आंध्र प्रदेश 11 अरुणाचल प्रदेश सहित आपनकर रिलेट करके लिखि देछि नेक्स्ट बात कोन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया सबमिट्स करिसंती देयर ऑडिट रिपोर्ट रिगार्डिंग द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ हुम कहा सहित क्विक इस्तर इस
माने कौन होची ईस्थर कहूची श्री श्री कहूची सीमा सीमा तमे गोटे कहा ना देखि गोटे रिबन फीता बांधो 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 तमे गोटे रिबन फीता दियो या तो चलजी आ कोन ईस्थर दउची श्री को गोटे रिबन फीता श्री दउची सीमा को गोटे रिबन फीता सीमा तमे पुन ट्रांसफर करो माने जेते बेले गोटे चैट सेक्शन को देखला लगू हमर फीता बंडा बंडी चलची गधस्थल आस मते को सीएजी ऑडिटर जनरल कहले अपन माने काम से रिलेट करिवे क्विक जल्दी प्रेसिडेंट वेरी गुड राइट आंसर आपन कोन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर हां आ भीतर की फोकस करिवो इस्तर भीतर की फोकस करिवो आस सो को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आपन करो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द यूनियन एंड ऑडिट रिपोर्ट आपन कहा को सीएजी प्रोवाइड करंदी ना मुर्मू मैडम को प्रोवाइड करन माने प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करंदी नेक्स्ट मते कहतु माने एमिति आपन माने मन सीएजी ऑफ इंडिया यांको टू रिसीव की करंदी ना रिसीव अंडर द आर्टिकल 151 तापरे आपन कर कोन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपन कर ताकू रिसीव करंदी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा को दियंती ना पार्लियामेंट को दियंती तापरे एटा आपन कर कोन बिफोर मेन जजमेंट आपन कर पार्लियामेंट को आसे हैला नेक्स्ट मते कहतु जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर जॉइंट सिटिंग आयरलैंड कहला मन रखछो तो आसा जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन देयर एब्सेंस हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशन जदि स्पीकर आपन कर एब्सेंट अछंती ताहाले लाइक इन हिज रोल आपन कर किए नै परिबे ऑब्वियसली आपन कर डेप्यूटी स्पीकर नेबे ह ना किए नेबे डेप्यूटी स्पीकर नेबे आ कोन तमने नबो तमे नबो कि रे गधस एंड गधिस कहबो डेप्यूटी स्पीकर आपनकर नेबे द प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग इफ बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर आपनकर एब्सेंट अछंती ताहा सॉरी आपनकर सॉरी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर पचारछि कि स्पीकर ओनली ना हां जदि बोथ आपनकर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आपनकर लोकसभा रे एब्सेंट अछंती ताहाले किए नबो मते कहलो जल्दी हां 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 मोटा देखिनी डेप्यूटी चेयरमैन भूल से मारी देछि ना अरे भूल से मारी देछि रे एटा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हेबे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हेबे भूल से मारी देछि काई एमिति होउछो हां 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 ओके देखो अरे योर एक्सप्लेनेशन कोड होला एक्सप्लेनेशन नहीं यार ओके फाइन चलिबो आसो मते को सरकारिया कमीशन वाज सेट अप इन 1983 टू एग्जामाइन एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो सरकारिया कमीशन आपन कर हेतिला हां हां बोथ जदि एब्सेंट हेले ताहाले आपन कर डेप्यूटी चेयरमैन ताकू ने डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जदि बोथ आपन कर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट रहिले ताहाले तारो मीटिंग ताकू प्रिसाइड की करिवे ना डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करिवे एति की जिंस हैला हां ओके गाइस देखो मते को सरकारिया कमीशन आसो सरकारिया कमीशन कहा सहित सेंटर स्टेट रिलेशन फैंटास्टिक तो राइट आंसर कोन होची सेंटर स्टेट रिलेशन सहित हम रिलेट करछे काहा को ना सरकारिया कमीशन जदि पता छै इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ताको हमें कहा सहित रिलेट करि परबे कहला दैट वाज गवर्नड बाय द ट्रिब्यूनल्स दैट वाज सेट अप अंडर आर्टिकल केते हबो आर्टिकल 260 262 ठीक है चेक कर दबो गाइस एटा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आपनकर अंडर आर्टिकल 262 बोथ हुए मोर जति दूर मने पड़छ हैला जेटा आपनकर कावेरी वाटर डिस्प्यूट थिला कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हैला ठीक है चेक कर दबो 262 तो ना 63 62 63 262 ओके फाइन थैंक यू आसो जदि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पचारछ ये आपनकर केबे हितिला मन रखंतु स्पेशलाइज हितिला कोठी ना गोटे फाइनेंशियल पैनल आपनकर बसतिला मोस्ट नोटेबल कोन ना नरसिंहा कमिटी 1991 1998 इलेक्शन रिफॉर्म्स इंडिया ये के आपनकर कहा रिलेट करबा ना दिनेश दिनेश कोन लगरे डीजीसी थिला ना दिनेश गोस्वामी कमिटी हैला दिनेश गोस्वामी कमिटी कहले आपनकर इलेक्टोरल ता सहित आपन माने रिलेट करेबे नेक्स्ट मते कोन राइट आंसर आपनकर सेंटर स्टेट रिलेशन सहित अपॉइंटेड इन 1983 टू रिव्यू द फेडरल पावर शेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट 1983 रे हितला ये चेयरमैन थिले ना आरएस सरकारिया थिले सेथिला की तार ना रखाइतला सरकारिया कमिटी क्लियर नेक्स्ट मते को Which of the following layers of the atmosphere contains the ozone layer? Which absorbs the harmful ultraviolet radiation? UV rays आपनकर absorb करेंगे को layer? Quick. अच्छा डाइट कोकटा पीनी बोली मो तंटीटा काटुछ
डाइट कोक पीनी बोली मो तंटीटा खिचखिच हो भिक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो आसो तो राइट आंसर कौन हो 20 कौन 21 नंबर स्ट्रेटोस्फियर पक्का वेरी गुड तो राइट आंसर आपन कौन है संजीवनी हाँ बा सिंचन कौन आ करबी आसो सो स्ट्रेटोस्फियर हैला दैट वाज द सेकंड लेयर आपण मान जानि संती दैट वाज फिल्टर करके ऑलमोस्ट 99% अल्ट्रावायलेट रेस को कोन रखी दिए सो देखो तो राइट आंसर कोन स्ट्रेटोस्फियर द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर होस्टिंग द 99% ऑफ हार्मफुल सोलर अल्ट्रावायलेट यूवी रेस एंड मेन इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ना प्रोटेक्ट करूची तो जानिले हेल्प द प्रिवेंट द स्किन कैंसर आपनकर कैटलिस्ट करूची डीएनए डैमेज को ए सब नै के आपण मान रिलेट करि परिबे नेक्स्ट मते कोंतु मैम मो बहुत दूर अच्छा भाबिलो एते कथा सेटा ग्रेट थिंग आसो मते कहंतु द छोटनागपुर प्लेट्यू इज अ फेमस फॉर इट्स rich mineral deposits which of the following rivers does not originate from or flow through these plateau region मझरे डाइट को पूरा बंद हे जाइतला जानछ ना नाही मो पूरा हां हां हे पडिथली पागल हे जाइतली कोन करबी बोली डाइट को माने डिफरेंट साइट सब खोजुथली कि कोठे टिके डाइट कोक मिली जानता गोटे जदी 40 बदले 80 टंका नियंता मु पछे नै आसंती जानछ ना एमती गोटे एडिक्शन आउ तो राइट आंसर आपनकर कोन होला ऑब्वियसली महानदी रिवर छोटनागपुर प्लेट्यू सिहावा हिल आपनकर कोन अमरकंटक ता सहित भी रिलेट आपन को करितली दामोदर रिवर कहले आपनकर छोटनागपुर प्लेट्यू रु भी बाहाची दामोदर रिवर बट दैट वाज फ्लो ईस्टवर्ड थ्रू कोन रहर ऑफ इंडिया में ताकू कहू सुवर्णरेखा कहले दैट वाज ओरिजिनेट आपनकर रांची पाखरु महानदी को हमें कहबा सिहावा हाइट्स रो आपनकर ओरिजिन हिच ओके महानदी रिवर कहले नॉट कोन जे not Kanpuri. Originates in the Sihawa highlands of the Chhattisgarh, flows through the Odisha, bypassing the coast. तो छोटनागपुर प्लेट्यू स्ट्रक्चर देखि दियंतु छोटनागपुर प्लेट्यू एठी आपनकर ओडिसा रा मैप रहला एठी ओके डन नॉट महानदी नुहा ऋषिकुल्या हैला आसो नेक्स्ट में देखो व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट आंसर देलो राइट आंसर कौन हबो दैट वाज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लियर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता में रिलेट करेगा बिकॉज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहले दैट वाज प्रीडोमिनेंटली आपनकर कोन ईस्टर्न घाट से रिलेट करेगा ईस्टर्न सहित हेले आपनकर ये हेजिबो सो राइट आंसर आपनकर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हेजिबो रेनफॉल क्लाइमेट केते 200 रु 700 सेंटीमीटर एंड 700 सेंटीमीटर एभव आपनकर कोन ना रेनफॉल हुए लोकेशन कोठी ना वेस्टर्न घाट से रिलेट करेबे एंड आपनकर टॉल ट्रीज 30 टू 60 मीटर हाइट रो टॉल ट्रीज आपन मानका देखिया को मिलिबे क्लियर क्वेश्चन पढांतु सेटा पहिली आपन बुझिले बोल अच्छा लुका अच्छा बुझिली कोन कहू बुझिली एबे मते कहंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेटरी विंड बेल्ट्स पढा क्वेश्चन टाको टी भर रे गाइस पचारि जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेटरी विंड बेल्ट्स blows from the subtropical high pressure belts toward the equatorial low pressure belt कौन है राइट आंसर को कौन है राइट आंसर क्विक दैट वाज द ऑप्शन ए वेरी गुड ताको हमें कौन कहू छे ना ट्रेड विंड कहू छे ट्रेड विंड कौन कहू छे ना दिस इज द परमानेंट ईस्टर्ली विंड्स जे ब्लो करू छे कंटीन्यूअसली कोठू from the subtropical high pressure to the towards the equatorial low pressure westerlies को कहीं के मैं कहबानी कारण planetary winds that was blow subtropical high pressure belt toward the subpolar low pressure subtropical लो subpolar हेले हमें westerlies कहबा देखि दियंतु कोन कहूची ना trade winds आपनकर कहूची ITCZ zone that is the equatorial low pressure zone आपनकर flow करूची that was steady persistent easterly winds and blow from the subtropical high pressure belt -30 degree north to south पर्यंत आपनकर ब्लो करे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन आगे देखि दियो कोन जो कोने पर्यंत चाहू चंदी एसो जॉइन करिबा लागि स्टिल करी नाहंती अनुशासन बैच को नै जानतु बिकॉज़ टाइम आपन मन पाखे बहुत अछि जदी एबे नो नाहंती पछरे जति के बाडी छाटी हेले किछि लाभ होबो ना बिकॉज़ जो माने नै जानती से माने ही आपन का आगे रहबे हैला देन चॉइस इज योर्स
देखो स्पंदन बैच होची प्योरली सीजीएल मेंस पाई आपण माने नै परिबे 1599 रे आपण माने मो कोड जे कोनसी बैच नउचंती आपण माने मो कोड यूज करि परिबे आपण मान कोटे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलिबो जदि न मिलुची ताहाले 9124730510 एटा रहिची आपनकर मोर कांटेक्ट नंबर मते एठी आपण माने डीएम करिवे देन आई विल हेल्प दैट आउट ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आसी जंतु मते कहि दियंतु ओपीएससी फ्री मॉक केमिति अवेल करि हेबो मैम इस्थर कौन तुमको कहबी सहयोग बैच सिंपली वेदांग क्लासेस रो टेलीग्राम देखंतु एठी आपनकर वेदांग क्लासेस रो ऐप अपडेट आपनकर पिन हेकी अछि चैट सेक्शन सेठी की जानतु डायरेक्टली सहयोग बैच आपनको देखेबो सेठी जाई के आपन माने क्लिक करले आराम से हेजिवो हैना मते आपन माने काली कॉल करंतु ऑफिस आवर रे आपन माने मते WhatsApp रे कांटेक्ट करंतु एल्स आपन माने 82805 32825 ए नंबर को आपण माने आफ्टर 10 ओके तो 10 am रे आपण माने एटा को कॉल करंतु आपण माने को माने इजीली एक्सेस करै देबी कोटा कोन दरकार हैला आसा तो द डंकन पैसेज कहूची माने आपण माने कहा साथ रिलेट करिवे ऑब्वियसली आपण माने साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान साथ रिलेट करिवे यदि मिनिको एंड लाक्षाद्वीप कहूची सेटा आपण कोन हेजिवो ना 9 डिग्री चैनल हेजिवो 9 डिग्री चैनल हबो ना नहीं मिनिको एंड लाक्षाद्वीप मने पडुची ना नहीं त माने करो कोन 9 डिग्री चैनल अरेबियन सी सहित आपण माने जिबे हो ना नहीं आपनकर कार निकोबार ग्रेट निकोबार ताको आपण माने रिलेट करिवे कहा सहित ना 10 डिग्री चैनल सहित रिलेट करिवे इंडिया एंड श्रीलंका हेले आपण माने जानि सब ताको कहितली कोन ना पाक स्टेट सहित रिलेट करिवे हो ना नहीं तो देखि दियंत राइट आंसर कोन कहूची ना South Andaman and Little Andaman site that are separated by the Tonkin Passage, a critical strategic strait located in the Indian Ocean. Clear? So it आपनकर South Andaman रहिला and एपटे आपनकर Little Andaman रहिला and पछिरे आपनकर passage 24 किलोमीटर होची तार कोन ले तार ना रहउची Tonkin Passage हैला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अच्छा बच्चा गैंग मते कहि देला which of the following matches of the biosphere reserve and their states incorrect आपनकर रिजर्व देछि को स्टेट रछि कहि छला तोरा हम इनकरेक्ट कहिबा सिमिल पाल कहि देछि तो ऑब्वियसली ठीक आपनकर हबो ऑप्शन बी आपनकर राइट हे जिवो एठी आपनकर देछि ए रे जो ऑप्शन आपनकर देछि नॉकरेक मेघालय मते कहिला नॉकरेक मेघालय हबो ना नै डेफिनेटली हे जिवो देहान देबांग अरुणाचल प्रदेश जानि छंती किंतु एठी जो कहिछि अगस्त्यामलाई कर्नाटक रे आपनकर अछि कि यदि अगस्त्यामलाई कर्नाटक रे भूल कहूछि ता माने अगस्त्यामलाई एक्चुअली रे कोठी अछि के मते कहि परिबो ये आपनकर केरला रु तमिलनाडु यदि एठी केरला थांता गाइस ताहाले ठीक हे थांता यदि एठी तमिलनाडु थांता ताहाले भी ठीक हे थांता कारण दीटा जाको बड़ स्ट्रेच करिछि इज दैट क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सो राइट आंसर आपनकर केरला एंड तमिलनाडु हबो ओके बाकी सब ठीक अछि नेक्स्ट मते कहि दियो ना द कुरुशियो करंट इज व्हाट टाइप ऑफ ओशन करंट एंड इन व्हिच ओशन इज लोकेटेड कौन हबो राइट आंसर जल्दी राइट आंसर द कुरुशियो करंट यदि कुरुशियो करंट कहि जे दैट मींस दिस इज अगेन ए one current in the North Pacific Ocean कौन हबो मैम आरआई एग्जाम गोटे क्वेश्चन एटमॉस्फेयर ऊपर रुआ बाबा ऑप्शन आंसर बाछिबार थिला क्वेश्चन प्रॉपर मोर मने पडुनी कि किछि पचारि छंती कि आपनकु यार आंसर की कोन थिला क्वेश्चन तार आंसर कोन हबो मैम क्वेश्चन कहू न मु जानि भी केमती के किछि कहि ना दे रिलेटेड मैम आरआई एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन एटमॉस्फेयर ऊपर थिला ऑप्शन रु आंसर को बाछिबार थिला क्वेश्चन प्रॉपर मने पडुनी ना गाइस मो सहित के डिस्कस करि ना दे रिलेटेड जदि भी के पाइला ताहले मते कुहो जदि पिलांकर आपनकर डाउट रहउची ताले डेफिनेटली हमें ताको क्लैरिफाई करि कि आगु बुझिबा हला कोल्ड करंट से रिलेट करछ बिल्कुल नहीं दैट इज द वन करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन ऑप्शन ए ही हम आपनकर वन करंट सहित हमें दिबा बैक आपनकर कोन ब्लैक स्ट्रीम सहित दिबा देखो so one current in the north pacific ocean that black stream boli kha jay this one ocean current flows northward past of the eastern coast of japan ro apankar kono na ye past करके आसे देखि दियंतु कोन होची ताइवान रो apankar japan हैला black stream one current ताको कोहा जाउची एतिक जिनसा क्लियर ओरिजिन पाथवे कोठू ना कुसियो करंट आपण ताको कोहा जाउची ताइवान रो नै कि apankar japan पर्यंत क्रॉस करूची ताको apankar कोन ना black stream बोली कोहा जाउची एतिक जिनसा क्लियर one current in the North Pacific Ocean हाँ one current हेले आपण माने रिलेट करे परिबे
वार्म रहो राइट आंसर कौन देछ हां नॉर्थ पैसिफिक जदी वार्म करंट इन द इंडियन ओशन कहूची दैट मींस आपनकर कोटा को रिलेट करूची कोटा को ना उगलास करे उगलास ना आपनकर एमिति स्पेलिंग रहइबो AGULHAS उगलास करंट आपनकर हेछि हला जेम ताकू हम को जे ब्लैक स्ट्रीम सेम दिया को उगलास करंट कहजिवो मोजाम्बिक करंट बोल भी कहजिवो हला नेक्स्ट मते को अगेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया कोटा हबो अरे यार कितने स्पीड पढेले भी ओके फाइन देखो कौन कहूची जल्दी विदाउट क्वेश्चन आंसर अरे से कंफ्यूज होचंदी कि तांको मने पडुनी क्वेश्चन डा चाहुचंदी कि जति आपण माने से जानि नांती एक्चुअली जे क्वेश्चन डा पचारिले से एक्चुअली जानि नांती कि आपण माने केते विद्वान व्यक्तित्व ना कि एग्जाम दे के आसला पर एग्जाम हॉल ही आपण माने क्वेश्चन सहित आंसर भी भूली जांती इवन आपण माने रिजल्ट आसला पर भी जानते कि आपण एग्जाम देइसंती हो ना आपण को भितर एमिति भी महापुरुष महियसी महिला माने अछंती जे कि एग्जाम देई के आसीथिबे जते बेले पडिसाहर पिला रिजल्ट बाहरिबो ताको पचरिबो अरे सांग तोर कोन हेची मु ए एग्जाम टा देइथिली अच्छा ना ना मु बोधे एई वर्ष देइनी मु आरोटा देइथिली एटा ना ना एटा मु देइनी अरे सांग तो रोल नंबर टा टिके कहूनु मु जानिबी काले देखिबी जदी काले थिबो रोल नंबर टा हे एडमिट कार्ड तो नाही रोल नंबर कोठु कहबी माने एमिति भी पिला अछंती संसार रे एग्जिस्ट करंती एंड तम मान को भीतर भी एग्जिस्ट करंती मो क्लास रे एग्जिस्ट करंती हां एग्जाम सॉरी ले हमर लुका बाबू पा एडमिट कार्ड चिरी दियंती चिरी देबा करू आउ थरे पढ़ी देखो रोल नंबर मने रखो गथस्थल आस सो राइट आंसर कोन हला आपनकर एलुवियल सॉइल सहित जिबा ओके ओके नेक्स्ट So right answer alluvial soil, the single largest soil. जदि आपन को सेम कथा पचार देला ओडिसा विषय रे ताहाले गो विथ द रेड soil. Clear? कोन रेड soil सहित छिबा. Next मते को the Thal Ghat pass connects which of the following two major cities? कोन हबो दीटा cities? लैटेराइट सॉइल दीप्ति बहुत ही क्लेई स्ट्रक्चर तार थाए माने ता स्ट्रक्चर ता बहुत ही क्लेई थाए एंड आपण माने ताको कोठी कहले हाई टेंपरेचर एंड जोटे हाई टेंपरेचर थिबो ता सता हेवी रेनफॉल एरियाज थिबो ताको आपण माने पाइबे माने जोठी इंटेंस लीचिंग होथो जोटे हेवी रेनफॉल हो ते लीचिंग प्रोसेस कोन तेबेले ऊपर एरिया रे हाईलैंड एरिया रे हाईली टेरेंस एरिया रे या फिर हिली एरिया रे आपण मिनरल्स रिच पोन एरिया रे आपण वर्षा हबो लीचिंग प्रोसेस रे आपण मिनरल और सब बोही की तळ लेयर को पड़े आसीबो एंड जोटा ऊपर रहि गला ताको हम कहबे दैट इज द लैटेराइट सॉइल हैला दैट इज वेरी क्लेई स्ट्रक्चर माने स्ट्रक्चर रे थाए हैला देखो माने को थाल घाट कथा पचारि छी आसो थाल घाट कथा पचारि छी जल्दी क्विक कोन कहउछ थाल घाट मुंबई एंड नासिक गधस्थल आंसर देलो ओके दीप्ति मते को मुंबई एंड नासिक सहित हम रिलेट करछु मुंबई एंड पुणे कहले को घाट ओई गधस्थल कोन कहिबी त माने को गधस एंड गधिस टैक्ले से आत्मा भीतर जो शांतिटा मते मिले आई कैन एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स को कोन अब बोर घाट कहले आपण माने रिलेट करिवे मुंबई एंड पुणे सहित जदि सेम आपण को पलक्कड एंड कोयंबटूर पचारिला कोन कोयंबटूर एंड पलक्कड पचारिला ताहाले आपण माने कोन कहबे ऑब्वियसली पलक्कड गैप कोन पलक्कड गैप या फिर आपण को जदि पलघट पचारिला कोन पलघट गैप पचारला ताहाले आपण माने ता सहित रिलेट कर परिबे अच्छा बेंगलुरु एंड चेन्नई सहित भी किछ अछि की जल्दी को बेंगलुरु एंड चेन्नई सहित किछ अछि की किछि घाट फाट आपनकर नाही हैला मन इच्छा उठे किछि भी लिखि दियोनी टाइम बफरिंग कोन गई होउछ कोन कहलो मैम मते भी अच्छा तमन भी भल लागे अच्छा तमन तो हमरो रियल स्टूडेंट आसो तो मुंबई एंड नासिक सहित हम रिलेट करछे रोड कनेक्टिविटी कोन और को एनएच आपनकर कनेक्टिविटी करछे एनएच 160 मुंबई रु आग्रा रोड देन डिस्टेंस केते 165 किलोमीटर टोटल किलोमीटर भी गाइस माने रखिबो हैला हां नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स फीचर्स द यूज ऑफ हेवी फेशियल मेकअप elaborate costumes and narrative expressions based on the Ramayana and Mahabharata संध्या से मेसेज टाको साइलेंट कर दियो नोटिफिकेशन ऑफ कर दियो गाइस तुम माने अच्छा गोटे कथा मते कहिले पर्यंत
तमे माने एज ए स्टूडेंट ए पर्यंत सब एप्लीकेशन जहां तो यूज करूछ नोटिफिकेशन ऑफ रखुछ ना नहीं द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कहूची जो प्लेटफॉर्म रो तमे पढुछ एप्लीकेशन रखिछ सेटार नोटिफिकेशन ऑन रखिवो बाकी एक्स वाई जेड व्हाटएवर यू आर यूजिंग द एप्लीकेशन तार नोटिफिकेशन ऑफ करिकि रखिवो सबु बेले रखिवो कारण दैट इज द बिग डिस्टर्बिंग लाइक एलिमेंट आपनका लाइफ रो आपनकर एजुकेशन लाइफ कथकली भरतनाट्यम कहीं हम कौन हम कथकली हम बेसम बेसम वर्ड आपनकर कथकली आसुची ना कथकली को रिलेट करिवो आसाम सहित ना कौन ना कोठी सब आपनकर रिलेट करोची आसा केरला ना कि आसा कथकली द क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला फीचर हैविंग द ग्रीन रेड फेशियल मेकअप ए टाइप रे आपनकर थाय द फेमस हन नै मते को शास्त्रीय हेले आपनकर आसाम पड़ेबो भरतनाट्यम हेले तमिलनाडु क्लियर हां हां कश्मीर कन्याकुमारी मते को द फेमस that is the Ambubachi Mela festival is celebrated annually at which of the following temples guys को माने पर्यंत सेशन को लाइक करिनो मते टिके कहिलो माय डियर गधस एंड गधिस माने टिके सेशन को लाइक करो त मान को जदी टिके टिके दया माया अछि हैला टिके सेशन को लाइक भी करो आ कहिला परे लाइक ता खाली करिया को त मान मने पड़े नहले मने पड़ेनी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए पक्का ऑप्शन ए को लॉक करिबा कोन कामाख्या टेंपल आपनकर अरे काई चलुनी ओके कामाख्या टेंपल आपनकर कोठी आसाम से रिलेट करिबा जेटा पोस्ट एनुअली आपनकर कोन ना अंबुबाची मेला देखो तो कोन कहछि दिस इज द मा कामाख्याकर टेंपल जय मा कामाख्या आसा होस्ट एनुअल अंबुबाची मेला टू सेलिब्रेट द मॉनसून मेन आपनकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ द रिसाइडिंग गॉडेस कामाख्या ओके आफ्टर दैट मते कोंदु नेक्स्ट कोन कहछि Now, Pithora is a highly distinct ritualistic wall painting style belonging to the tribal communities of which state? को state सहित हमें Pithora tribal communities रो painting style को हमें relate करूँचे मत देखो जल्दी बिहार कहले अपन माने जानि संती मधुबनी पेंटिंग कहले गाइस बिहार जदी ओडिसा कहूची ताको अपन माने रिलेट जानसंती इकत हैला आपनकर सौरा पेंटिंग हैला ताको भी अपन माने रिलेट करि परबे सब जिंस को छाडी दियौ जीआई टैग आपनकर कोन पट्टचित्र का हमर फेमस तो पट्टचित्र से रिलेट करिवे जदी वेस्ट बंगाल कहूची आपनकर मन रखंतु कालीघाट पेंटिंग आपनकर कोन कालीघाट रे मां कालींकर मंदिर अछि ना त कालीघाट पेंटिंग्स को आपन रिलेट करिवे वेस्टर्न रहिला कि गुजरात से रिलेट करो सी ना पिथोर आर्ट एटा आपनकर एई टाइप रो होची पेंटिंग जोटा कि आपनकर गुजरात रे ट्राइबल कम्युनिटीज रो लोक माने करंती क्लियर को ट्राइब रो कहले आपन माने करे एक्जेक्टली ट्राइब रो ग्रुप रो नाम होची झिल ट्राइब को ट्राइब झिल ट्राइब रो कम्युनिटी लोक माने ताकू करंती हैला वेस्ट बेंगल कला जादू हाउ आसा द ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट आर्ट फॉर्म known as the कोन बोमालतम belongs to which Indian state को इंडियन स्टेट को हमें रिलेट करिवा क्विक को इंडियन स्टेट को हमें रिलेट करेइबा आंध्र प्रदेश कहिले थोलु बोमलत्ता कोन थोलु थोलु वर्ड आसीबोती आपण माने जानिबे आंध्र प्रदेश सहित राइट आंसर आपनकर कोन हेजिवो बोमलत्तम कनेक्टेड विथ तमिलनाडु दैट मींस आपनकर कोन कंबाइन करिबा सम एलिमेंट्स बोथ इन द रोड एंड स्ट्रिंग पपेट्री सी ए टाइप रे आपनकर हैला ए टाइप रे पपेट्री आपनकर यूज करा जाय कोठी ना तार ना रहछि बोमलत्तम कोठी तमिलनाडु रे एटा को यूज करा जाय हैला मन रखिबो नेक्स्ट मते कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विथ द लेजेंडरी म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्विक गाइस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उस्ताद माने आंसर दियो तमे भी गोटे उस्ताद जानछ ना नहीं तमे भी गोटे उस्ताद चैटिंग करिबारे गपसप करिबारे हाकि फ्लर्टिंग करिबारे डेटिंग करिबारे सेटिंग करिबारे तो माने भी गोटे उस्ताद ओके सो राइट आंसर आपनकर कोन हबो कहा सहित रिलेट करिबा ना सेनाई कोन सब मारुछ माने मन इच्छा सब मारुछ कोन हबो सेनाई सितार आपनकर पंडित रवि शंकर सितार सहित आपन मानकर नाम माने पडुची पंडित रवि शंकर को सहित रिलेट करेबे सितार सहित सरोद हेला आपन माने कहा को रिलेट करेबे सरोद कहले आपन मानकर उस्ताद आपनकर के थिले रे सरोद 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 उस्ताद अमजद अली खान यस माने पड़ला उस्ताद अमजद अली खान को सहित रिलेट करे हैला
सो राइट आंसर आपनकर की सेहनाई सहित रिलेट करबे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्लियर नेक्स्ट मते कहि दियंतु deficiency in which of the following vitamins leads to a clinical conditions known as the कोन ना pernicious anemia कहा सहित रिलेट करबा हाँ जहाँ भी तमें गुड़ा मो स्टूडेंट ना तम भले की हब तम भले की हब तमें गुड़ा पे दुनिया रे विरल खाली मोरी क्लास रे माळ माळ हैला आसो सो राइट आंसर कोन हबो क्विक दैट इज विटामिन मन रख विटामिन B12 डेफिशिएंसी रे आपन करो पर्निशियस एनीमिया डिजीज आपन करो हुई हैला कोन हबो पर्निशिया एनीमिया सहित प्रमाण जिबे दैट इज द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हमें कहि परिबा जे कि रेड ब्लड सेल रो मैच्योरेशन को कोन ब्लॉक करि दी इंस्टिटिंग आपन करो फैक्टर एब्जॉर्प्शन करि दी हैला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सो राइट आंसर आपन करो विटामिन B12 मते कोंतु व्हिच which phenomenological property of light waves causes the brilliant shimmering rainbow like the color seen on thin oil films floating over the water जेते बेले आपनकर वाटर ऊपर गोटे ड्रॉप ऑयल पकई देबे एंड ताकू आपण माने लाइट रे देखिबे ताहल ता ऊपरटा पूरा चिक करबो माने ग्लेज करे व्हाई को जल्दी कोथि पई करे रीजन कोन स्कैटरिंग तो बिल्कुल हबनी आपण मान जानि संदी स्कैटरिंग आपनकर कोथि रे आसीबो ना द रीडायरेक्शन ऑफ द लाइट waves by the atmospheric particles द्वारा आपनकर हेले हबो दैट मींस हमें कहि परिबा डे टाइम रे sky रो कलर कोन sky is blue because of which theory na the scattering method द्वारा हमें ताको रिलेट करै परिबा first about the total internal reflection then हमें कहि परिबा occurs when light traveling through a dense medium that hits a boundary at an angle that is large enough to reflect the completely inwardly आपनकर जेते बेले रिफ्लेक्ट करिवो ताको हमें कहि पारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किंतु जेते बेले इंटरफेरेंस कहूची किंतु जेते बेले डिफ्रैक्शन कहूची सेठी आपण माने कंफ्यूज होउचंती ना नाही मते कोंतु इंटरफेरेंस कहले आपण माने कोन बुझिबे मते कोंतु ना दैट वाज कॉज्ड बाय द ओवरलैपिंग लाइट वेव्स दैट मींस आपनकर रिफ्लेक्शन को बुझेबो दैट मींस आपनकर टॉप एंड बॉटम सरफेस को बुझेबो जेते बेले आपनकर वाटर ऊपर ऑयल भासी की थाए देखि पिक्चर अछि हाँ देखो सो आपनकर जेते बेले कोन ए जो ग्लेज हे के आपनकर देखा जाय देखि दिबे आपण माने केते बेले सपोज वर्षा पानी रे आपण माने कोन सडन पेट्रोल बोही जाउची केरोसिन पके देबे आपण माने कि ऑयल भी पकौ जदी ताहाले आपनकर जो ग्लेज देखा जाय दैट इज बिकॉज़ ऑफ द कोन ना आपनकर इंटरफेरेंस पई कहा जाय डिस्ट्रैक्शन आपण सॉरी डिफ्रैक्शन आपनकर कोन ना दैट इज द फिजिकल बेंडिंग जेते बेले गोटे मीडियम रु लाइट पास हे कि जस्ट के टिल्ट हे के आपनकर गोटे चेंज करे ए जो टिल्टनेस ता होची दैट इज द डिफ्रैक्शन clear spreading of light in a different medium slightly bending next mate kohantu yaar okay plant cell walls are primarily composed of which structural carbohydrate complex quick रोड रे देखिछो एमिति देखिछो ना यस इंचेन देखिछ आंसर दे दियो गाइस जल्दी कोन हमर राइट आंसर ऑब्वियसली सेलुलोज हो भाबुछ कि औरी कि गोटे मारले सब डेई पड़िबे तथापि स्निग्धा हमर सी मार देले स्निग्धा हमर सी मार देले सी रे कोन अछि ग्लाइकोजेन तमर केमिति हबो ग्लाइकोजेन ता कोन कि गोटे दैट वाज द ब्रांच्ड ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड जोटा कि यूज करा जाय प्राइमरीली बाय द एनिमल्स एंड द फंजी स्टोर करिकि मेटाबॉलिक एनर्जी को रखिबा लागि ओके एति जिंस मन रख बाकी आपनकर चिटिन कहले हम कोन बुझुचे चिटिन आपनकर कोन दिस इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स जे फॉर्म करूची कोन सेल वॉल ऑफ द फंजी एंड द हार्ड आउटर एक्सोस्केलेटन ऑफ द जेते सब इंसेक्ट्स अछंती तांकर हार्ड जति सपोज आपनकर कोनसी पोको उड देखिले तांको ऊपर सपोज आपनकर बसा दिन तेलुणी पोको देखिथिबे ता भीतरटा त पूरा सॉफ्ट थिबो ना नहीं ता ऊपरटा उडे हार्ड लागि ना नहीं दैट इज बिकॉज़ ऑफ द चिटिन प्रेजेंट इनसाइड दैट ओके नेक्स्ट आपनकर राइट आंसर हैला सेल्युलोज सी द सेल्युलोज दैट इज अ रिजिड लाइनर chain polysaccharide that provides the structural strength to the mechanical support the green plant cell walls मान को provide करे okay next मते कहंतु which of the following components of human blood plays a vital role in initiating the physiological process of blood clotting कहिला माने कहा सहित रिलेट करबो त माने जल्दी ची कोन चिटिन माने चटणी कौन सब कहूच क्लास रे आस सो राइट आंसर कौन है सी वेरी गुड सो कौन हम थ्रोम्बोसाइट सहित हम रिलेट करबा अच्छा थ्रोम्बोसाइट सहित रिलेट करबा बिकॉज़ आपन कौन कहिछि ना
विटामिन के सहित आम रिलेट करवा थ्रोम्बोसाइट जोटा आपन लीड करूची आपन ब्लड क्लॉटिंग को कॉमनली नोन एज कोन ना प्लेटलेट रहउची आपन थ्रोम्बोसाइट्स एंड दीज आर द सेल फ्रैगमेंट्स हमें कहि परबे जे कि एग्रीगेट करूची द इंजुरी साइट्स रे फॉर्म करूची कोन गोटे फ्लॉग एंड इनिशिएटिंग द ब्लड क्लॉटिंग राइट देयर प्लाज्मा एल्बुमिन कहिले ता माने कोन बुझी ना पर मोस्टली एविडेंटली आपन माने कोठी पाइबे ना ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा भीतर आपन माने प्लाज्मा एल्बुमिन को पाइबे ठीक अछि लिकोसाइट्स कहले हमें कोन जानचे एटा आपनकर कोन लिकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी रो गोटे पार्ट जदि हमें एरिथ्रोसाइट कहूचे ये आपनकर कहार प्लाट ना याकू हमें कोन आरबीसी रो प्लाट बोली जानि आपनकर गोटे पार्ट बोली जानि एरिथ्रोसाइट को नेक्स्ट देखो सो द फेनोमेनन ऑफ एसिड रेन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शंस थकी गली को इन्वॉल्विंग द एमिशंस ऑफ व्हिच गैसेस कौन हबो क्विक झड़ स्टार्ट हे गलानी हो स्टार्ट क्लास सार देबा जल्दी 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 आंसर दे दियो क्लास एंड कर देबा झड़ आसलानी न उड़ी आड़ी जीव तुम माने क्लास कर परिबनी मु पुनी देखि भी परिबिन त माने केते बाटे उड़ी की पड़ला ओटे की आनी वाला की हैला जल्दी जल्दी क्लास करो कोन होची दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड हां SO2 NO2 वेरी गुड क्लियर सो एति की थाउ आपनकर आजिरो क्लास बाकी क्वेश्चंस आपनकर सब बेले तो 10टा बोलुची आ कोन केते आ स्पीड नेबी मु तो माने कुह केते आ स्पीड मु नै परिबी माने आजी तो नहीं जाइथांती आ रैपिड फायर करी कि 15 मिनिट लागि थांता बट तंटी टा टिके काटुछ कोन करिया आसो अगेन कहूची जो माने पता लाइक शेयर सब्सक्राइब करिनो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिनबो बिफोर दैट जदि आपण माने स्पंदन बैच होचंती 1599 मो कोड SPG10 ओनली मो कोड यूज करबो SPG10 10% डिस्काउंट करबी हैला मो कोड नबो हैला तापर जानतु सहकारी जूनियर असिस्टेंट्स पे आपण माने नै परिबे 1199 देकी एंड OPSC ASO बैच पे नै परिबे 1999 देकी हैला and here is me here my insta id follow kari paribo and this is the Vedang Classes ro telegram id scan kari dabo telegram आपनकर ये पाई कोन pdf पाई हैला yes guys thank you so much guys just टिके डाउन लागुची सो से एनर्जी रो सहित किंतु क्लास करि परली नाही बट इट्स ओके चलिबो तो तमान को चलिबो तो चलो thank you so much guys have a good day sorry have a good night take care of yourself but first of all do prioritize your parents this would be your first priority no one else in the world thank you so much guys चलो टाटा बाय बाय गुड नाइट काली क्लास देखा कल भल क्वेश्चन आनिबा एंड